बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं SST FPSC के रिलेटेड पास्ट पेपर्स, जो कि हम इंग्लिश का पोर्शन पहले डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद हम जो है एजुकेशन से रिलेटेड पेडागोजी का जो पार्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम काफ़ी सारे MCQs डिस्कस कर रहे हैं। आज हम 263 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ अ रब्रिक। रब्रिक क्या है? बेसिकली रब्रिक एक असेसमेंट टूल होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ अ रब्रिक। रब्रिक का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? इसका जो प्राइमरी पर्पस है दैट इज़ टू इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है हु यूजेस रब्रिक्स। रब्रिक्स जो है वो कौन यूज़ करता है? टीचर्स भी यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल SPSC गाइड एंड इंग्लिश प्रिपरेशन को लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। आपको इस चैनल पर PPSC और FPSC इंग्लिश लेक्चरर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। PPSC 1 पेपर की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। So next is what type of rubric assessments assesses student performance on a specific task। वो कौन सी टास्क होती है जो स्पेसिफिक टास्क को असेस करती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, दैट इज टास्क स्पेसिफिक रब्रिक। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रब्रिक इवेल्युएट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, दैट इज होलिस्टिक रब्रिक्स। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ रब्रिक ब्रेक्स डाउन परफॉर्मेंस इनटू स्पेसिफिक क्राइटेरिया, दैट इज एनालिटिक रब्रिक। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ रब्रिक असेसेस स्टूडेंट ग्रोथ ओवर टाइम, दैट इज डेवलपमेंटल रब्रिक। Next है what is the benefit of using rubrics in assessment, that is all of the above. Simplifies grading, improves student performance, enhances feedback. Next है how are rubrics typically designed, that is collaboratively. Next is what is essential for effective rubric design, that is all of the above. Clear criteria, specific standards, consistent grading. Next is what is benchmarking in education. व्हाट इज़ बेंचमार्किंग इन एजुकेशन जो है वो क्या है? दैट इज़ कंपेयरिंग स्कूल परफॉर्मेंस विद इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ बेंचमार्किंग इन एजुकेशन, दैट इज़ टू इम्प्रूव स्टूडेंट आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बेनिफिट्स फ्रॉम बेंचमार्किंग इन एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ बेंचमार्किंग कंपेयर्स परफॉर्मेंस विद इन एन इंस्टीट्यूशन, दैट इज इंटरनल बेंचमार्किंग। Which type of benchmarking compares performance with industry leaders, that is external benchmarking. Next is what type of benchmarking focuses on strategic planning, that is strategic benchmarking. Next है what is essential for successful benchmarking in education, that is all of the above. Clear goals and objectives भी होने चाहिए, relevant data and metrics भी हो, stakeholder involvement भी हो. How often should benchmarking be conducted in education, that is continuously. What is a common challenge in implementing benchmarking in education, that is all of the above. Resistance to change, limited resources, lack of data. Next है what is a benefit of benchmarking in education, इसका जो benefit है that is all of the above. Improved student outcomes, increased efficiency, और ये accountability को भी enhance करता है. Next है what is the primary purpose of फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो प्राइमरी पर्पस है दैट इज़ टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ असेसमेंट इवेल्युएट्स स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ ए कोर्स, दैट इज समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, दैट इज फॉर्मेटिव असेसेस learning during a course, summative assesses learning at the end. Next what type of assessment evaluates students learning in real world contexts, that is authentic assessment. Next is which type of assessment identifies students strengths and weaknesses, that is called diagnostic assessment. Next है 288 MCQ, that is what type of assessment evaluates the effectiveness of instructional programs, that is evaluative assessment. Next is what type of assessment uses specific measurable criteria, that is criterion referenced assessment. Next is which type of assessment relies on teacher judgment, that is subjective assessment. Next question is what type of assessment compares student performance to established standards, that is criterion referenced assessment. Next is who proposed the theory of multiple intelligences. Multiple intelligences की theory जो है वो होवर्ड गार्डनर ने propose की थी, and that is 8 types of multiple intelligences theory. Okay, next is what is the main idea of
Gardner's theory, that is there are multiple types of intelligences. When Gardner proposed this his theory, और ये जो theory है वो Gardner ने 1983 में propose की थी. Which intelligence involves linguistic skills, that is linguistic intelligence, ये सारी उसी की types हैं. Which intelligence involves problem solving and logic, that is logical mathematical intelligence. Next is which intelligence involves visual spatial skills, that is spatial intelligence. So the next is 298. Which intelligence involves self awareness and introspection, that is intrapersonal intelligence. Next is what is a key implication of Gardner's theory for education, that is focus on individualized instruction. The last one is how can Gardner's theory inform teaching practices, that is by using multiple teaching methods. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. Allah Hafiz.